So in last class, last class we have completed diagram is used to find the induced EMF of alternator. आज की क्लास में इसका हम यूज देखेंगे. So from last class, induced EMF of alternator E is equal to under root V cos phi plus IA RA whole square plus V sin phi plus minus IA XS whole square. And this positive sign is for lagging load. Plus sign is for lagging load. And negative sign is for लीडिंग लोड. ठीक, तो अभी हमें इसका यूज देखना है. नाउ दिस इक्वेशन can be used to find voltage regulation of alternator. ठीक, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इट इज voltage regulation of alternator. हमने लास्ट जब फेजर डायग्राम बनाया था तभी देखा था कि since we know that terminal voltage of alternator, the terminal voltage of alternator remains constant, therefore taken as reference. इसको हम रेफरेंस लेते हैं. therefore जो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला मिलेगा, परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर इज E माइनस V अपॉन V इंटू 100. इससे पहले हमने ट्रांसफार्मर में भी किया है. परसेंट वोल्टेज रेगुलेशन इज E माइनस V अपॉन E इंटू 100. राइट, दिस इज फॉर जनरेटर्स एंड दिस इज फॉर ट्रांसफार्मर्स. वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला अलग अलग होता है. ओके, चले. अच्छा, अभी तक जितनी भी मशीनें आपके सामने आई थी, चाहे डीसी जनरेटर हो चाहे ट्रांसफार्मर हो, हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि वोल्टेज रेगुलेशन कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए. कम होना चाहिए. आपके पास सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट आता है, तो आप चाहते हैं क्या कि आप जब स्विच ऑन करें तो वोल्टेज डाउन हो जाए? लोड ऑन होने पे डाउन होना चाहिए क्या वोल्टेज? इन प्रैक्टिकल अदर एप्लीकेशंस किसी मशीन में वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम चाहिए होता है. लेकिन अल्टरनेटर एक ऐसी मशीन है, जनरेटर ऐसी मशीन है जहां पे आपको टर्मिनल वोल्टेज फिक्स करना है. ठीक, तो इस दूसरों के अकॉर्डिंग जनरेटर्स का वोल्टेज आपस में एडजस्ट करना पड़ता है. यहाँ पे आपको हाई वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए. ठीक, तो द पॉइंट इज द प्रैक्टिकल alternators operate in parallel. Okay? The practical alternators operate in parallel, therefore they need high voltage regulation to match voltage of each other. आपको वोल्टेज वेरी कराना पड़ता है. okay? कितना वेरी करना पड़ता है? Practical alternators have voltage regulation up to 40 to 50%. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से लिखिएगा. एंड इन केस ऑफ मॉडर्न अल्टरनेटर्स,
have voltage regulation up to 60 to 70%, 60 to 70% तक वोल्टेज रेगुलेशन होता है जो मॉडर्न नए अल्टरनेटर्स हैं उनका, राइट। तो फॉर्मूला सेम है, ई की वैल्यू आप फेजर डायग्राम से निकालते हैं, वी की वैल्यू आउटपुट वोल्टेज फिक्स रहता है उसका, तो ई माइनस वी अपॉन वी विल बी फॉर्मूला फॉर वोल्टेज रेगुलेशन ना। अब इसमें कंडीशन है कि मिनिमम कब मिलेगा और मैक्सिमम कब मिलेगा, राइट। सो कंडीशन फॉर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन होता कितना है, कितना होता है, किसी भी डिवाइस का मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, 0. 0, राइट। So since we know that minimum voltage regulation means 0 voltage regulation. Minimum voltage regulation means 0 voltage regulation. That is E minus V upon V into 100 equal to 0. That means E minus V equal to 0. Question number 1. Yes or no? Yes, sir. And from phasor diagram, E is equal to under root V cos phi plus IARA whole square. अच्छा एक चीज और है, प्लस फाइन सॉरी IARA का होल स्क्वायर प्लस V sin phi minus IA excess, right? ये सुनो, Yes. राइट। आपको चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो वो ऐड करके मिलेगी सब्ट्रैक्ट करके मिलेगी, Subtract. सब्ट्रैक्ट करके, दैट मींस माइनस साइन मींस लीडिंग लोड कंडीशन। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड इन लीडिंग लोड कंडीशन, ये सुनो। Yes. ना दूसरा पॉइंट, इफ अल्टरनेटर impedance, so synchronous impedance plus jx theta in polar form, Hmm. and RA is equal to ZS cos theta and XS is equal to ZS sin theta, लिख सकते हैं क्या, Yes. ये सुनो, Yes. ZS cos theta और ZS sin theta। थीटा क्या है, synchronous impedance angle, it is internal property of alternator। क्वेश्चन नंबर 2 collectively सब ZS के बारे में है, सही। क्वेश्चन नंबर 3, now from equation 2, the alternator induced EMF EG is equal to under root V cos phi plus IARA whole square plus V sin phi minus IA excess whole square, squaring both side, EG is equal to EG square is equal to क्या मिलेगा, V cos phi plus IARA whole square plus V sin phi minus IA excess whole square। अब इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, EG स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2V IA RA cos phi, ये सुनो, Hmm. प्लस V स्क्वायर sin स्क्वायर phi प्लस IA स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2V IA एक्सेस sin phi, सॉरी माइनस, ये सुनो, Yes, sir. यहाँ यहाँ V स्क्वायर कॉमन है क्या, यहाँ यहाँ IA कॉमन है क्या, Hmm. और यहाँ पे 2V IA कॉमन है, कॉमन टर्म्स को एक साथ कीजिए, इट मींस EG स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर, बचेगा क्या, cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi प्लस IA RA स्क्वायर प्लस एक्सेस स्क्वायर प्लस 2V IA, सुनो, ब्रैकेट में RA
cos phi minus xs sin phi. क्वेश्चन तक चेक करिए, किसी को कोई डाउट है? आई ए स्क्वायर होगा। नोट कर लिया आपने? जी सर। फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, वन तो ये होगा स्क्वायर। क्या? आर को हम लिख सकते हैं क्या? जेड एस कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस जेड एस साइन थीटा साइन फाइव। ये सुनो, अभी जेड एस भी कॉमन है, ये हो गया ई जी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई ए स्क्वायर जेड एस स्क्वायर प्लस टू वी आई ए जेड एस। ब्रैकेट बचा कॉस फाइव कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन फाइव फ्रॉम इक्वेशन वन। व्हाट विल बी ई जी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर? आगे जीरो, जीरो। ई और वी जीरो, ई माइनस वी इक्वल जीरो है, तो ई जी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर भी जीरो होगा। इट मीन्स आई ए स्क्वायर जेड एस स्क्वायर प्लस टू वी आई ए जेड एस cos theta sin phi will be zero. What is cos theta cos phi minus sin theta sin phi? cos है cos b minus sin है sin b कितना होता है? That is cos है cos b minus sin है sin b. cos a minus b। a minus b or a plus b? ओह, a plus b a plus b. आइए दैट इज कॉमन है क्या? राइट साइड भेज दीजिए, जीरो हो जाएगा। 2v cos theta plus phi equal to 0 means cos theta plus phi is equal to minus ia zs upon 2v for exact calculation. Exact condition for zero voltage regulation. अगर आप इसको कंपेयर करें, आई जेड एस क्या है? ड्रॉप इन आर्मेचर, और वी क्या है? टोटल वोल्टेज। अच्छा, ड्रॉप वोल्टेज ज्यादा होता है कि आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होता है? आउटपुट वोल्टेज। तो दिस आउटपुट वोल्टेज वी इज मच हायर देन आई जेड एस, ऊपर से 2 से भी मल्टीप्लाई किया है, राइट? तो आई जेड एस 2v इज नेग्लिजिबली स्मॉल, ये बहुत स्मॉल है, ये सुनो। यस। तो फॉर अप्रोक्सीमेशन cos theta plus phi is equal to 0 बोल दूं? ये सुनो, यस। और theta plus phi is equal to pi by 2 और phi load angle will be equal to pi by 2 minus theta. ये सुनो, आपको लास्ट क्लास में याद है कि थीटा का वैल्यू कितना होता है? सिंक्रोनस इम्पिडेंस हाईली रिएक्टिव है कि नहीं? ऑलमोस्ट 90, तो 90 minus 90 will be what? जीरो। 0. That means phi is close to 0. Phi close to 0 means unity power factor. Right? लेकिन ये एग्जैक्टली 90 नहीं है, थोड़ा 90 से कम है, तो स्लाइटली लीडिंग कंडीशन। phi equal to 0 is unity power factor, right? phi का वैल्यू slightly more than 0 is slightly leading. Highly leading means close to 90, 90 तक नहीं जा रहा है। So that zero voltage regulation
occurs in alternator. इसको अंडरलाइन कर लीजिए. नॉट यूनिटी पावर फैक्टर, नॉट लीडिंग, नॉट लैगिंग पोजीशन. बहुत हल्का सा लीडिंग होना चाहिए. ये सुनो. Yes, sir. ओके. मैं किसी लोड पे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा. नेक्स्ट इज कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन. Since we know that E is equal to, again, under root V cos phi plus IARA whole square plus V sin phi plus minus IAXS whole square. वो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके? ऐड करके. So it can be concluded that maximum voltage regulation occurs in lagging load condition. जब ये प्लस होता है ना. Okay. Therefore E will be what? E is equal to under root V cos phi plus IA RA whole square plus V sin phi plus squaring both sides. E square is equal to V cos phi plus IARA whole square plus V sin phi plus IAXS whole square. V square cos square plus 2V IARA cos phi. पहले टर्म का स्क्वायर कर दिया, दूसरे वाले टर्म का भी. V square sin square phi plus IA square XS square plus 2V IA XS sin phi. अगेन लास्ट टाइम की तरह V को यहाँ पे IA कॉमन है, यहाँ पे 2V IA कॉमन. कंबाइन करें तो लिख सकते हैं E square is equal to V square cos square phi plus sin square phi plus IA square RA square plus XS square plus 2V IA RA cos phi plus XS sin phi. Yes or no? Yes, sir. No. E square is equal to V square plus IA square ZS square plus 2V IA. RA को हम लिख रहे हैं ZS cos theta cos phi plus ZS sin theta sin phi. Okay, ZS again common. Means E square minus V square is equal to IA square ZS square plus 2V IA ZS cos theta cos phi plus sin theta sin phi. Yes or no? Yes. Say this is equation number 1. Now we know that minus V upon V into 100 and V is constant. So therefore voltage regulation, for voltage regulation to be maximum, E minus V should be maximum. Yes or no? अगर E minus V maximum है, that means E square minus V square is also maximum. Yes or no? Yes. What is condition for maxima? That means D upon D phi. बाकी सब में से क्या चेंज होगा? थीटा इज प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेटर, वो तो चेंज होगा नहीं. That means D upon D, केवल लोड का पावर फैक्टर आप चेंज कर सकते हैं. E square minus V square should be 0. बताइए. Yes. ओके, पुट कर दीजिए. Therefore for maximum voltage regulation, D upon D phi of IA square plus
ब्रैकेट में cos थीटा cos फाइव प्लस sin थीटा sin फाइव to 0. IA is what? आर्मेचर करंट। कौन सी आर्मेचर करंट? वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड से फुल लोड तक किया जाता है ना। नो लोड पे E है, फुल लोड पे V है। दिस IA is full load armature current or rated armature current. किसी मशीन का आर्मेचर रेटेड करंट कांस्टेंट होगा कि वेरी करेगा? रेटेड कांस्टेंट। कांस्टेंट रहेगा। ZS मशीन का प्रॉपर्टी कांस्टेंट। 0 प्लस 0 2V IA ZS सब कांस्टेंट। cos थीटा अगेंस्ट कांस्टेंट। cos फाइव का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस टेन। sin फाइव cos थीटा प्लस sin थीटा अगेंस्ट कांस्टेंट। sin फाइव का डिफरेंशिएशन cos फाइव इक्वल टू 0। अब ये 2V IA ZS इसको भी राइट हैंड साइड भेज दीजिए, 0 से मल्टीप्लाई हो गया खत्म। हमें मिला क्या फाइनली? sin थीटा cos फाइव माइनस cos थीटा sin फाइव इज इक्वल टू 0। ये सुनो, व्हाट इज sin A cos B minus cos A sin B? साइन ए माइनस sin A minus B sin थीटा minus 5 is equal to 0, right? sin थीटा 0 कब होता है? एट एंगल 0 हम कंक्लूड कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 5। व्हाट इज थीटा? इज tan इनवर्स XS by RS RA. It should be equal to tan inverse XL by RA RL, सॉरी लोड। पाई लोड पे डिपेंड करता है, थीटा इंटरनल इंपेडेंस पे डिपेंड करता है। It can also be concluded that XS by RA is equal to XL by RL. Yes or no? This is for maximum voltage regulation. और थीटा होता कितना है? Close to 90. It is highly lagging. तो phi should also be highly lagging. Yes or no? यस। Right. यस सर। Okay. So finally हम conclude कर सकते हैं, can be concluded that voltage regulation of alternator is maximum for highly lagging load condition. इसको नोटिस करिएगा, हाईली लैगिंग, स्लाइटली लीडिंग पे 0, हाईली लैगिंग पे मैक्सिमम, राइट? और अब इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें वोल्टेज रेगुलेशन का, दिस इज वोल्टेज रेगुलेशन, दिस इज पावर फैक्टर, बीच में है यूपीएफ, इधर है लैगिंग लोड, इधर है लीडिंग लोड। जैसे जैसे लैगिंग लोड कंडीशन बढ़ेगी पावर फैक्टर घटेगा, 0.8, 0.6, 0.4, 0.6 लैगिंग, 0.4 लैगिंग, 0.3 लैगिंग। मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है आपको इस पॉइंट पे कहीं। ठीक। उसके बाद लैगिंग लोड कंडीशन में भी वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ता है, अप टू मैक्सिमम मिलेगा आपको हाई लैगिंग में, और लीडिंग लोड कंडीशन में भी वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ता है और ज्यादा मिलेगा।
आगे चलें। जी सर। अब ये जो रेगुलेशन हमने पढ़ा है इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके, मैं नोट करके लाया हूँ, इसको थोड़ा देखते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। We have question number 1. Question is, when alternator is operating at 0.8 power factor lagging regulation is 25%. When the alternator is operated at 0.8 factor leading, its option is A, less than 25%, C, equal to 25%, D, none of these. बताइए। Less than 25. लेस देन 25 बेस्ड ऑन और दिस नहीं हो रहा है, ठीक है, उतनी देर में ये यहाँ पहुंच जाएगा। देख पा रहे हैं? तो आंसर इज लेस देन 25%। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिए। व्हेन alternator is operating at 0.8 power factor lagging, regulation is 25%. If it operates at 0.7 power factor lagging, its regulation will be, again option same है, A, more than 25%, बताइए, ग्राफ का यूज करिए। More than 25%. तो 0.7 कुछ यहाँ आएगा, राइट, वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा मिलेगा। जैसे जैसे पावर फैक्टर घटेगा या पावर फैक्टर एंगल बढ़ेगा, ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 Yes. आगे, वेट अ सेकंड। Question number 3 is, when alternator is operating at 1500 RPM, regulation of the alternator is 25%. When alternator operates at 1400 RPM, its regulation will be option is less than 25%, option C equal to 25%, option D none of these. रिलेशन मैंने बताया, ई माइनस वी, इसको लिख सकते हैं क्या, आई ए जेड एस अपॉन वी, ऊपर में आई ए है और कितना है ये जेड एस इज अप्रोक्सीमेटली एक्सेस 2 पाई एफ एल रिएक्टेंस का वैल्यू अपॉन ई इज 4.44
फाइव एफ टी, राइट, के डब्ल्यू लिख लीजिए। आपका स्पीड चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, और देयरफॉर आप नोट करके लिख सकते हैं इसको, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर does not depend on speed। अब इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ओनली फॉर स्लाइट वेरिएशंस। ऐसा नहीं कि आप 50% डिक्रीज कर दें स्पीड को। आप समझ पा रहे हैं? जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर